Good morning to all of you once again. It's gratifying to see such energetic faces early in the morning. Just like yesterday, I welcome you all today for the Faculty Development Program. And in continuation, we start the day on an auspicious note with the lighting of the lamp. So I request Dr. Sanjay Bhyani sir and all the head of the departments to step up on the stage for lighting of the lamp. The monotony of life is broken by the vibrance that diversity poses. We at Bhyani Group of Colleges not just believe in academic excellence, but a progressive, transformative overall development of our faculties. Yoga and meditation helps you gain control of your life force. And today we shall commence with a session on yoga and meditation by our very own coach for him as we welcome him on the stage. देखिए, हम सब टीचर्स हैं, वो टीचर्स जो है वो हमेशा परफेक्शन की खोज करता है। मैं कल के पूरे प्रोग्राम को 5 नंबर दे रहा हूँ जो आप लोगों ने काम किया है, क्योंकि हम अभी वास्तव में होश में नहीं, हमें पता नहीं होता कौन से शब्द कहाँ बोलने हैं, कैसे अरेंजमेंट करने हैं। और आज तो -4 वैसे ही हो गए, क्योंकि जिस ऑडिटोरियम में हमें कंडक्ट करना उसकी सफाई का हमें ध्यान नहीं, बेहोश नहीं तो और क्या है हम लोग। एक पियोन यहाँ पे 10-10 पियोन काम कर रहे हैं, पर हमारी ये कैपेसिटी नहीं कि हम उसको क्लीन कर सकें, हम वहाँ की सफाई का ध्यान रख सकें। अगर योगा करना है तो वहाँ की अरेंजमेंट हम देख सकें। सो आज तो -4 वैसे ही हो गए, हो सकता है आप माइनस में पहुँच जाए पूरे। हर रोज़ मुझे परफेक्शन चाहिए, मुझे हर काम परफेक्टली चाहिए। आप समझ नहीं रहे, और फिर मुझे गुस्सा आता तो बहुत खतरनाक आ जाता, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पर आप गिन गिन के 10 गलतियां कर रहे हैं पहले। गुड मॉर्निंग। प्लीज टेक केयर। मुझे जानता हूँ इन सब लोगों की दिमाग की पावर को, इसको छोटा मोटा काम ना समझा जाए, इंसानों को डील करने का काम को छोटा काम ना समझा जाए। आज मैं पहले सबसे पहले वैसे तो मेरे को योगा कराना था, पर मैं थोड़ा आपको एक बेहतरीन आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, है ना। और मैं चाहता हूँ सब होश में रहे, चाहे वहाँ पे लोग हैं तो वो बेहोश है, सब लोग होश में रहे, सब लोग होश में रहिए, जाग जाइए। सच कह रहा हूँ, मतलब हम सब लोग बेहोश हैं, हम सब लोग को आइडिया ही नहीं हमें क्या करना है। हम सब लोग टाइम पास करने पे लग गए। ये जीवन वापस नहीं आएगा, ये जीवन मिलता है बस एक बार। इस जीवन को जी लो भरपूर, हर समय हर पल को जी लीजिए भरपूर। जब चाहो वो वैसे बन जाइए, बहुत मज़ा आता है। तो ये सबसे पहले एक कैसे एक अच्छा वीडियो है, पहले उसको देखते हैं ताकि मैं भी तब तक थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ और मैं आपको वो सब जो आप चाहते हैं और जो मेरा सेशन रखा गया वहाँ तक पहुँचे। देखिए, हर आदमी के पास 2 विकल्प मिलते हैं मेरे पास। मालकियत होती है एक, तो मालकियत, कुछ लोग मलकियत भी बोलते हैं। ये मलकियत भी एक चीज़ होती है, जो मालिक बनता है वो जिम्मेदार बन जाता है, और जो नौकर बनता है वो ड्यूटी निभाता रह जाता है। हर चीज़ में मालिक बना जाना चाहिए, जिसको जो काम मिल जाए उसका मालिक बन जाए बस वो। फिर देखो कितना मज़ा आता है, कितना जोश आता है, कितना मज़ा आता है, और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि किसी मैरिज में देखो कुछ लोग मालिक है, बाकी ज़्यादातर लोग गुलाम ही बने हुए हैं। मालिक बना, ऑनरशिप हमारे को ताकतवर बनाती है, हमें जोशीला बनाती है, हमारे न्यूरॉन को जगा देती है, हमारे को अधिक ऊर्जावान बना देती है, हमारी चाल को तेज बना देती है। लेकिन गुलामीपन हमारी चाल को धीरा बना देता है, हमारे मस्तिष्क को पूरी तरह से यूज़ नहीं होने देता। हम CL, PL और इन सबको एडजस्ट करते करते अपनी ज़िंदगी को यापन कर जाते हैं। बहुत लोग हैं जो अपने दिमाग, अपने दिल, अपने अंतरात्मा का कुछ बेहतरीन उपयोग कर पा रहे हैं। आइंस्टाइन पैशनेट रहे होंगे, अब्दुल कलाम साहब भी बहुत पैशनेट रहे होंगे,
ये पैशन क्या है, ये ऑनरशिप क्या है, पर उन्हें किसी ने ऑनर नहीं बनाया। वो हटा उम्र चाहे राष्ट्रपति भी बने तो भी सैलरी पे थे, लेकिन एक मालिक बना था जो उनको बहुत ऊपर ले जा रहा था। मालिक बना में हमें हायर डेजिग्नेशन मिल जाती है बहुत जल्दी से। 3 साल में आप हायर डेजिग्नेशन में पहुंच सकते हैं अगर आप जिम्मेदारी लें तो, और जिम्मेदारी ना लें तो पूरी उम्र जो है एक लिमिटेड और मिनिमम डिग्री तक और मिनिमम स्टेटस तक आप पहुंच सकते हैं। अरे जो जिम्मेदारी लेता है उसकी तो भाषा बदल जाती है, उसका तो बोलने का तरीका बदल जाता है, उसकी तो चाल बदल जाती है, उसकी तो सोच बदल जाती है, उसकी तो एनर्जी का लेवल बदल जाता है। वो हर शब्द उसके अलग तरह के निकलते हैं। वो बोलता है आई एम रिस्पॉन्सिबल, यस इट विल डन, निश्चित रहिए मैं हूं ना। ऐसे खतरनाक शब्द बोलते हैं, हमें उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते कि काश हम भी ऐसे बन जाए। वही तो 2 पाँव, वही तो 2 हाथ, वही तो एक दिमाग, और क्या है उसके अंदर एक ही जो इंसान है। हम सब लोग, सब आइंस्टाइन भी वैसे ही रहे होंगे, न्यूटन भी ऐसे ही रहे होंगे, सब लोग एक से ही तो हैं, पर कुछ लोग जागे हैं, कुछ लोग बेहोश हैं। मुझे लगता है वो जागता है जो मालिकियत लेता है, जो हर चीज़ में मालिक बना फील करता है। पहले एटीट्यूड होता है तो फिर डेजिग्नेशन मिलती है। हम बोलते पहले डेजिग्नेशन दो, फिर क्या पता आप एटीट्यूड से जियो ना जियो। इसलिए हर जगह काबिल इंसान को ढूंढा जा रहा है, हर जगह बेहतरीन इंसान को ढूंढा जा रहा है, हर जगह जिम्मेदार आदमी की जरूरत है, पर हम जिम्मेदारी से भागते हैं। और ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इस वीडियो को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको नहीं समझा तो फिर एक हल्की ज़िंदगी की तरफ, एक सिंपल ज़िंदगी की तरफ हम निकल जाएंगे। मुझे लगता है सब लोगों में कैपेसिटी, कोई हेड बन सकता है, कोई प्रिंसिपल बन सकता है, कोई डायरेक्टर बन सकता है, खुद अपना कॉलेज एस्टेब्लिश कर सकता है, लेकिन पहले नहीं मिलेगा। पहले आपको अपने अंदर मलकियत लानी होगी, पहले आपको अपने अंदर ऑनरशिप की फीलिंग लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी फील आपकी ताकत है। छोटे से भी काम को उस शिद्दत के साथ किया जाए। जैसे कभी ऐसे रामायण में एक बात आती है कि वो गिलहरी जो कि राम सेतु बन रहा था, उसमें अपनी पूंछ के ऊपर मिट्टी लाके उसको करती है, वो फील द ऑनरशिप। वो अपने छोटे से काम को कितनी खूबसूरती से करने की कोशिश कर रही है कि मैं भी कंट्रीब्यूशन करना चाहती हूँ, मैं भी कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये हमारी भावनाएं हमारे लिए बहुत ताकत का काम करती है। तो आइए हम थोड़ा सा ऑनरशिप के एटीट्यूड को समझे। मुझे एक अच्छा वीडियो लगा इन दिनों, किसी ने मुझे भेजा है, पर मुझे उस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आएंगी पर कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी, कुछ कम महत्वपूर्ण होंगी, तो महत्वपूर्ण चीज़ों को बड़ा बनाना पड़ेगा। ये एक वीडियो आपकी लाइफ को बदल सकता है। हमें रोजाना 10-10 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, हमें एक वीक में एक वीडियो देख ले, लेकिन उस वीडियो को फिर जी लें तो फिर हमारे में बदलाव आएगा। हम सब लोग 360 डिग्री बदलाव के लिए यहाँ हैं, हम सब लोग बेहतर बनने के लिए आए हैं। हमें रोजाना सुबह पढ़ के आना चाहिए, हमें रोजाना फ्रेशनेस होनी चाहिए। हम सब लोग लक्ष्य इंटरनेशनल और अच्छी अच्छी साबुनों से तो नहाते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, लेकिन वेयर इज योर फ्रेशनेस, मेंटल फ्रेशनेस कहाँ है आपकी? कहाँ है मेंटल फ्रेशनेस? कितने टीचर्स हैं जो आज सुबह उठे थे और कुछ नया और अद्भुत पढ़े थे और अंडरलाइन किए थे और उसे डायरी में नोट किए थे और आज उसे जीने की कोशिश करने वाले हैं? कितने टीचर थे ऐसे जिन्होंने ऐसा किया? आज सुबह उठे, आपने कुछ नोट डाउन किया। मुझे लगता है ये फ्रेशनेस है। आप फ्रेश है, बाकी सब बॉडी पे लटके हैं। हम अपने बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहे। इंसान की जो बॉडी है ना, वो तो इल्यूशन है, इल्यूशन है। जला तो अभी आज आप जाओगे मुर्दाघर में, देखना कई मुर्दे जल रहे हैं, और जलने के बाद वो 80 किलो के मुर्दे जो है 80 ग्राम के राख में बदलने वाले हैं। और अगर जला दिया जाए उनको तो 80 ग्राम की राख उड़ जाने वाली है, क्योंकि हम तो एनर्जी है। अगर वो इल्यूशन ही तो था, और क्या था ये बॉडी? तो बॉडी से आगे नहीं निकल पा रहे हम लोग। बॉडी की सफाई, बॉडी की क्लीनिंग है ना, हेयर स्टाइल, इससे ऊपर निकल नहीं पा रहे हैं, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। जबकि क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर चीज़ जो है वो एनर्जी है ना। आप थोड़ा सा लाइट करते जाइए, थोड़ा सा तोड़ते जाइए, आपकी बॉडी इतनी सी पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अगर एटॉमिक पार्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उसे तोड़ दिया जाए, तो वी ऑल आर एक्चुअली एनर्जी। सो एनर्जी के लिए क्या कर रहे हैं? कल मैंने एक बताया, तो मैं अब टीचर से सुनना चाहता हूँ। कल मैंने एक बात बताई, एंटीना को लिए अपना, क्योंकि हम एंटीना बोलते तब जब हमारे सामने सवाल पूछे जाते हैं, उससे पहले हम सब तो फिर स्विच ऑफ कर देते हैं। कल मैंने सवाल पूछा था, कल मैंने एक बात बताई थी कि वाइब्रेशन 2 चीज़ों के मिलने से क्रिएट होती है, और वाइब्रेशन से एनर्जी बनती है और एनर्जी से मेटलाइजेशन होता है ना। ये सब बातें मैं बहुत स्टडी करके, बहुत रिसर्च करके, बहुत चीज़ें अप्लाई करके बात बोल रहा हूँ। इसलिए इन बातों को ऐसा ना कोई ये अप्लाइड साइंस है, ये अप्लाइड बातें हैं, इन बातों में दम है। और मैं वो बातें जो मैंने समझी नहीं ना, मैं बोलता भी नहीं कभी।
है ना, क्योंकि ये कोई प्रदर्शन की जगह नहीं है, एक पर्पज से अपन ने इस चीज को फॉर्मेशन की है। सो मैंने बोला था कि दो चीजें मिलने के बाद में वाइब्रेशन क्रिएट होता है और उस वाइब्रेशन से एनर्जी बनती है और एनर्जी से मेटलाइजेशन होता है। और अगर आप किसी चीज से एग्री ना हो मुझसे तो मुझे बताया कि सर हम इस बात पे एग्री नहीं है, आप मुझे जरूर बताया कि सर इसमें मैं आपकी बातों में तर्क का दम है, फिर भी एग्री नहीं हुआ। और मुझे ऐसे लोग अच्छे लगेंगे जो सच्चे हैं, जो वास्तव में सच बात बोलते हैं। हमें ढोंगी नहीं बनना, हमें दिखावटी नहीं बनना। हम सब लोग जो है यहाँ पे जो प्रोग्राम है उसकी थीम के अकॉर्डिंग चाणक्य बनने हैं। चाणक्य जगा हुआ इंसान है, जागे हुए आचार्य हैं। इनकी आंखों में एक चमक है, वो चमक ज्ञान की वजह से है, वो चमक किसी उद्देश्य को पाने की आकांक्षा की वजह से है। अगर हमारे जीवन में भी अगर कोई आकांक्षा नहीं है तो हमारे भी आंखें में कोई शिथिलता होगी, तब नहीं होगा। जबकि हम सब लोग तो बहुत पावरफुल है ना। मैं कई बार बोला है ये बात, मैंने इन दिनों बहुत साइंटिफिक, क्योंकि मैं बायोलॉजी भी पढ़ता हूँ, क्वांटम फिजिक्स भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, फिजिक्स भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, है ना। थोड़ा सा ब्रेन साइंस के बारे में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो मुझे पता लगा आज इन दिनों जब मैंने जाना तो पता लगा कि एवरीथिंग इज इनसाइड एंड वी आर सर्चिंग आउटसाइड। सारी पावर हमारे अंदर ही है और किसी को भी नहीं पता कि वो कितने पावरफुल है। किसको पता है कि वो कितने पावरफुल और उनकी योग्यताएं कितनी है और वो क्या कर सकते हैं, उसके पीछे क्या साइंटिफिक फैक्ट है। बहुत कम लोगों को मालूम है। अपने कॉलेज में भी पढ़ने वाले टीचर्स के सामने कोई सैकड़ों बार ये बातें प्रस्तुत की गई, लेकिन कम वक्त ये मन है कि मानता नहीं, सुनते नहीं हम लोग। और मैंने कल बोला भी था कि हम सुनते क्यों नहीं है, उसका भी जवाब दीजिए। 2 सवाल और दोनों के चाहिए मुझे जवाब, है ना। तो बताइए ये कम वक्त मन सुनता क्यों नहीं है, ये दिल जो है तो वो चीज़ें क्यों नहीं चाहता जो चाहनी चाहिए, वो आइडिया क्यों नहीं आता जो आ जाना चाहिए था। किसी रोज न्यूटन को आ गया था, आइंस्टाइन को आ गया था, वो आइडियाज जो कृष्णा को आ गए थे हमको नहीं आए, क्यों नहीं आए बताइए। रेजी और हैंड, ये तो क्वेश्चन मैंने बहुत बार पूछा था। सब सोए थे क्या, नहीं जागे? देख लीजिए सुनने का लेवल देख लीजिए। सिर्फ 3-4 टीचर ने हाथ खड़ा किया, जबकि इसको तो बहुत एग्रेसिवली पूछा गया था और 50 बार घुमा घुमा के पूछा गया था। 2 विकल्प रहेंगे जिंदगी में, बुद्ध और बुद्धू बनने का। आप बुद्धू बनने को गले लगा ले तो ये आपकी मूर्खता है। कल हमने बोला था कि इस आदमी जागता क्यों नहीं है, क्यों उसको आइडिया नहीं आता, क्यों उसकी विल पावर नहीं बढ़ती। तो बस इतनी जवाब देंगे। मैं ऐसी क्लास लेने नहीं जाऊँगा, कल जाऊँगा ही नहीं। यहाँ भेज दूंगा कि वही तोतों को भेजूंगा जो तोता बनाएंगे आपको वापस, जो आपको वही क्रेमिंग करना सिखाएंगे, वही आपको ऊपर ऊपर की बातें सिखाएंगे। क्योंकि आप तो पढ़ते तो है नहीं, आप सुनते तो है नहीं। ऐसी जगह आकर बात करने का भी फायदा क्या है, क्या मिल जाएगा मुझे हमसे बात करके? ज़्यादा ना पढ़ा देना, वहाँ भी तोते पढ़ने सुनने आते, सुना देना उनको अपना नॉलेज, देखिए उसे क्या बदल जाती है दुनिया। सीखते ही नहीं है, जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। क्या पढ़ते हो आप लोग, क्या दम है आप लोगों की पढ़ाई के अंदर? क्यों व्यर्थ अपना समय खराब करते हो, क्यों एक सामान्य जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हो? बताइए मेरे पास जवाब। क्यों ये सब होता है? कोई सुन नहीं पाता, कोई विल पावर नहीं। प्लीज रेस थोड़ी देर ऐसे खड़े रखना, मैं यहाँ पे गला फाड़ रहा हूँ, आप लोग की इतनी भी हिम्मत नहीं कि आप हाथ खड़े कर सके, कुछ थोड़ी देर बता सके कि आप लोगों को आता है कम से कम। क्यों हम ऐसा कर पाते हैं? अपनी क्लास का मैम रिजल्ट है 30%, आज कल की क्लास का रिजल्ट है 30%, क्योंकि ये बात तो सुबह सुबह फ्रेश माइंड में बोली गई थी। तो कम से कम घुमा के 10 बार घुमाया था तो फिर बोली गई थी कि ऐसा क्यों होता है कि दुर्योधन ना चाह के भी बोलता है कि नहीं, अरे ये सब मैं जानता हूं भाई, कृष्णा उनके साथ है, जीत उनकी होनी है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा, मैं अपने को क्यों नहीं रोक पा रहा, युद्ध तो होगा। बोले वो ऐसे, बोले वो यस 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 मैम आप यस प्लीज। हाँ नहीं आप क्या बोलिए? हाँ, कर्मों की जो फोर्स है, फल नहीं, जो कर्मों की जो फोर्स, लॉ ऑफ कर्मास, जो कर्मा की ताकत है वो हमारे को करने ही नहीं देगी। चाहे आप बहुत अच्छे फैमिली में जन्म लोगे ना तो भी नहीं हो पाएगी, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा अपना काम करता है, वो ही विल पावर पैदा करता है। अगर किसी को ये बात समझ में आ जाती ना और गौर कर लेता तो वो शायद वो अप्लाई करने की स्थिति में आ जाता, पर हार्डली 40% लोग तो गौर ही कर पाए, अप्लाई तो 40 का भी 10-20% होने वाला है।
अगर उन्हें ये बात समझ आ गई होगी तो कल से उनसे एप्लीकेशन मोड में जाना चाहिए और आज कुछ हो जाना चाहिए था सुबह तक। तब हम इंसान बनेंगे, तब हम टीचर्स बनेंगे, तब इस तरह के प्रोग्राम का कोई फायदा होगा। नहीं तो क्या फायदा होगा? बकवास किए जा रहे हैं, कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा, अपनी एनर्जी को खपाए जा रहे हैं जबरदस्ती। जो प्रीसियस हमारी पावर है वही व्यर्थ जाए जा रही है। कर्मों की ताकत हमारी, लॉ ऑफ कर्मा जो हमको आगे ले जाती है। अगर हम आज कुछ अच्छा दे रहे हैं, अगर आज हम ओनरशिप के साथ जी रहे हैं, आज अगर हम अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं तो कल हमारा अच्छा होना है, नोबडी कैन स्टॉप। लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं सर मैंने इस लॉ को आजमाया और जिसको दिया उससे कुछ चीज आई नहीं वापस। ऐसा सर मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल है। आप क्या बात करते हो लॉ ऑफ कर्मा की? बहुत से लोग मुझे मिले जिनको मैंने किया पर उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। हमारे पास आर्ग्यूमेंट है पर आप पूछते भी नहीं मेरे को, आपके सवाल में मुझे बोलने पड़ते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ पे टू भी कम्युनिकेशन हो और बिल्कुल न्यूट्रल होकर बैठे। ठीक है, टीचर से बात कर रहे हैं, कोई डायरेक्टर नहीं यहाँ पर। जब बोलने आता है तो टीचर हो जाता है वो। हमें भी डिफरेंट रोल के अंदर जीना पड़ता है। जिस रोल में हो बस उसी रोल में अपने आप को समझना चाहिए। पुलिस वाला थाने में भी पुलिस वाला रहता है और घर में भी पुलिस वाला रहता है और स्कूल में जाता है तो भी पुलिस वाला रह जाता है। बेचारे की क्या जिंदगी है। उसे एटीट्यूड बदलना चाहिए। जब थाने जाए तो उसका एटीट्यूड अलग होना चाहिए, जब घर जाए तब अलग, बाजार जाए तो उसका एटीट्यूड अलग होना चाहिए। अभी हम जिस एटीट्यूड के साथ बैठे हो टीचिंग एटीट्यूड है, उसमें सवाल होने चाहिए। मैंने कहा रोजाना सवाल पूछिए। कल से अगर मुझे ऐसे ही जवाब मिले और ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ा ना तो मैं तो आऊँगा ही नहीं, चाहूँगा भी नहीं लोगों को सिखाया जाए, क्योंकि मेरे समय खराब करेंगे। क्योंकि जब भी मैंने अपना इंटेंशन बताया कि आई वॉन्ट टू सी यू लाइक दिस, ए पावरफुल पर्सन, ए कॉन्फिडेंट पर्सन, ए किंग मेकर जो किंग बना सकता है। हमने एक फैसला किया है कि हमें किंग नहीं बनना, हमें किंग मेकर बनना है। तो किंग मेकर बनने की कैपेसिटी जुटाने पर हम लग गए। इस प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्ट है कि आप फोर्स के साथ जिए, एनर्जी के साथ जिए, भरपूर जिए। वो 2-5% एनर्जी के साथ जी रहे थे उसे बंद करें आप और पूरे 100% जीने की क्षमता हमारी पैदा हो और हम सब लोग जाग जाए, साथ एनलाइटनमेंट हो जाए, अवेकनिंग हो जाए और ये प्रोग्राम वैसा बन जाए जो कि होना चाहिए था। और यहाँ वही बातें की जाए जो टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। बहुत सी बातें होती है जो बूढ़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, इसलिए वो बातें मतलब की नहीं। इसलिए मेरे को लगता है कि प्रोग्राम इन सब लोगों के लिए आज तक का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम बन जाएगा। क्योंकि जो प्रोग्राम आपने डिफरेंट अटेंड किए उनमें डिफरेंट सोच रही होगी, पर इस प्रोग्राम की तो सोच सिर्फ एक। हर्षिता कल से मुझे उससे कहता था कि ये जो है हमारी लॉ कर्मा है, हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आज आप कुछ भी करके आए होंगे, आज आपने 4 पेड़ों में पानी डाला था, ये भी करना है। और मुझे किसी ने पूछा बताओ सर्वश्रेष्ठ कर्म कौन सा होता है, कौन बताएगा सर्वश्रेष्ठ कर्म कौन सा होता है? पेड़ में पानी डालना, चिड़िया को दाना डालना, किसी को पढ़ाना, अपने बच्चों की परवरिश करना, सोसाइटी की परवरिश करना, सर्वश्रेष्ठ कर्म कौन सा होता है? यस, जो आप अपने लिए करते हो, जो आप अपने लिए करते हो वो सर्वश्रेष्ठ कर्म होता है। मैं एग्री नहीं हूँ, क्योंकि ये सेल्फिश बनना होता है, ये सभी लोग किए जा रहे हैं, है ना। ये सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, ये कर्म हो सकता है। इसलिए कर्म, अकर्म और विकर्म 3 बातें बताई गई गीता में। सर्वश्रेष्ठ कर्म में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी गलत हो सकता है, मैं नहीं कहता, है ना, पर मैंने इसको एक्सप्लोर किया इसलिए मुझे ऐसा लगता है शायद मैं सही बोलूँगा और आप लोग भी उसको अगर एग्री नहीं हो तो मुझे बताएं। यस, जो आप दिल से करें वो काम। क्या ये थियोरेटिकली थोड़ा अच्छा लगता है, पर कैसे पता लगे कि दिल से हुआ, दिमाग से हुआ? अगर वो हैप्पीनेस आ गई हमारे पास में, अच्छा जवाब और देखिए और एक्सप्लोर करेंगे। यस मैम, गुड मॉर्निंग सर। मेरे अकॉर्डिंग ये है कि एक ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी से घिरे हुए इंसान को जो अपनी ज़िंदगी से लिटरली हार चुका है, उसको ज़िंदगी में वापस उतारना, ताकि वो किसी दिन ये कहे कि तुम्हारी वजह से मैंने हार नहीं मानी अपनी ज़िंदगी। मतलब किसी पर्सन को मोटिवेट करना सर्वश्रेष्ठ, मतलब दूसरे की हेल्प करना, उसको मोटिवेट करना, उसको काउंसिल करना। यस, गुड मॉर्निंग सर। जो भी काम करना बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करना। हाँ, बस मैं बहुत अच्छा जवाब है, पर मैं भी ऐसे ही बोल रहा था कल तक, है ना। बजा दीजिए। जब मैं नहीं एग्री हूँ और आप एग्री हो तो आप भी बजा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं मैं एग्री हूँ तो ये आप लोग बजाएं। अगर आपको लग रहा है ये जवाब दमदार है तो इसका मतलब ये हो गया कि आप सब लोगों ने उसे वैलिडेट कर दिया, मुझे भी उस पर विचार करना चाहिए, सही मतलब होता है।
हाँ, ये भी जवाब है कि कोई भी काम जब सेल्फलेस होके किया जाए, है ना, ये निष्काम कर्म बताया गया गीता में, कि अगर हम निष्कामता के साथ काम करें, इसका मतलब कर्महीन होना नहीं है, इसका मतलब कामना रहित होना नहीं है, निष्कामता लेकर आना है कि काम क्या जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को गॉड पे छोड़ना। कितनी कितनी बढ़िया बात आज ये समझ में आ जाएगी, तो वो प्रेयर ही समझ में आ जाएगी। प्रेयर का क्या मतलब होता है? प्रेयर का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि ईश्वर के पास जाए तो कैसे बात की जाए उससे कि ईश्वर मैं नहीं करता, तुम करते हो। थोड़ी देर बाद आवाज आएगी कि बेटा तू क्या करता है, तो मैं तो सिर्फ विटनेस बनता हूँ सब चीज़ों का। जो चीज़ें हो रही है ना, नेट का रिजल्ट आ रहा है, मैं पास हो रहा हूँ, PhD हो रही है, मुझे अवार्ड हो रही है, मेरी नौकरी और तरक्की हो रही है, मैं तो सबका विटनेस बनता हूँ, पर करता तो ही है। और एक बात और सुन ले, अगर बुरा हुआ ना तो दे रहा है, और अच्छा हुआ ना तो भी दे रहा है। मैं तो स्ट्रेस लेता हूँ, वैसे मस्ती से अपना कर्म में धर्म समझ के करता रहता हूँ। जैसे फिलोसॉफी, अगर ईश्वर है ही नहीं, कुछ लोग मानते नहीं है, तो फिलोसॉफी बहुत अच्छी है, हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं तो प्रेयर करना आना चाहिए। हम लोग प्रेयर नहीं जान पाते, हम सब प्रेयर को वही समझते हैं कि संतोषी माँ की आरती की। आजकल तो कम होने लगी, पहले एक बार चला था, मूवी आई थी संतोषी माँ को, जिसको देखो जिस संतोषी माँ को व्रत कर रहा है, पूजा कर रहा है। अभी थोड़ी मूवी आ जाए, हम लोग उससे ब्लाइंड हो जाते हैं, फिर वही करने लग जाते हैं। ये ट्रेंड और ये भी फैशन में आ गया। पूजा एक कर्म का नाम रह गई, पूजा एक नमाज का नाम रह गई, पूजा जो है एक आरती का नाम रह गई। तो लोग बस बेहोशी की हालत में किए जा रहे हैं, और उस समय अपने सारे पेंडिंग काम निपटाते हैं। हम लोग भी कई बार कॉलेज आना होता है, तो देखना, गौर करना, उस दौरान जब हम प्रेयर रहते हैं उस समय सारे पेंडिंग काम जो मेंटल वर्क होते हैं वो सेटल हो रहे होते हैं। हम प्रेयर कर रहे होते हैं, पर हमारे पास सारे जितने भी पेंडिंग काम हो वो सब उसको उसी समय ध्यान आते हैं, और उस समय उसके बारे में कुछ डिसीजन ले रहे होते हैं। प्रेयर कितने लोग कर पा रहे हैं? मुझे लगता है प्रेयर बहुत अच्छी ताकत है। आप लोग के अपने आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, आप लोग अपनी बात कह सकते हैं कि सर प्रेयर हम करें, क्यों करें, कैसे करें। देखिए, अपने कॉलेज में एक सिस्टम बनाया, मैं चाहता था यहाँ पर पीस रहे, यहाँ हर आदमी पॉजिटिव सोच के साथ आए, यहाँ पे हर आदमी एक दूसरे की हेल्प करे। आपके यहाँ गुजरे हुए 6 घंटे जो है बहुत जीवन के बेहतरीन 6 घंटे बीते, तो वो कैसे करें, हाउ, वो संभव कैसे हो? बोला जब यहाँ पे हम थोड़ी सी देर के लिए सुबह प्रेयर से जुड़े, जैसे कि कॉलेज में कल्चर स्टार्ट किया गया। आप रोजाना मुझे वहाँ देखेंगे, इन दोनों थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, पर रोजाना देखेंगे कि मैं खुद भी ये सब चीज़ें करता हूँ, और जो करूँगा वही चीज़ें आप लोग को बताऊँगा। क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि ये जो साल जब हम खत्म करेंगे तब तक हम लोग बहुत आगे, हमारा सोच, हमारा मेंटल लेवल, हमारा मेंटल स्ट्रेंथ हमारी बहुत बढ़ जाएगी। तो अगर ये बात अगर सही नहीं भी है तो भी ठीक है। तो कल कैसे सुना, बेहोश में नहीं थे क्या? मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, तो आप बुरा क्यों मान रहे हैं? जब वास्तव में सब बेहोश है, क्योंकि हमें सुनना तक नहीं आ पा रहा। हम सब बैठते और देखते रहते हैं। ऐसे हमारी क्लास में होने वाला है, क्योंकि जो आप कर रहे हो वही आपकी क्लास में होने वाला है, क्योंकि यही न्यूटन लॉ है, एक्शन विल गिव रिएक्शन। जो आप दे रहे हैं वही कल निकल के आने वाला है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ करें और दूसरी जगह अपने आप ही कुछ हो जाए। इसलिए सुनना भी एक आर्ट है, ठीक से सुनना आर्ट। बताइए वो दो चीजें क्या मिला है? 1 टीचर, 2 टीचर, 3, 4। कल सुना कितने लोगों ने, और जवाब दो। इसलिए मेरे टेक्निकल सेशन तो होते हैं, मैं से कोई ऐसी अजीब सी बातें बताता नहीं, मैं तो जीवन की बातें बताता हूँ। यस, बताइए मैम। सर एटीट्यूड। एटीट्यूड, ये मैंने नहीं बताया था, बताइए। सर हमारी सोच से जो हम बोलते हैं वो। सोच, ये मैंने नहीं बताया था। यस सर, जो हमारे मन की सच्चाई है और जो हमारी ऊर्जा है, उन दो चीज़ों को यदि मिला ले तो आप वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। वापस बोलिए। सर, हमारे मन की सच्चाई से जो हम बोलते हैं, गहराई से जो हम बोलते हैं, और जो हमारे अंदर की तो ऊर्जा है। पहला नंबर क्या है? दो चीजें बताओ, 1 और 2, 2 वर्ड में जवाब चाहिए मुझे। सर, सच्चाई मन की। सच्चाई, ऐसा मैंने बोला था। बैठिए प्लीज। हाँ, सर फीलिंग्स एंड पॉजिटिविटी। ये भी वर्ड नहीं थे, आसपास हो, लेकिन ये वर्ड भी नहीं थे। यस सर, बताइए। पॉजिटिविटी और नेगेटिव? नहीं, ये भी नहीं था। देखो, इसने भी नहीं समझा। ये हमारी पढ़ाई का रिजल्ट को 100 बार पढ़ के हम याद कर पा रहे हैं। 8 GB मेमोरी पावर वाला इंसान इस तरह से कर रहा है, क्योंकि हम सब बहके हम सब खोए हैं। और ऐसी क्लास चलेगी तो मैं सोच रहा हूँ, मैं ऐसे बार बार आके, मैंने तो कल आना व्यर्थ हो गया, इसका मतलब कल बोलना ही व्यर्थ हो गया, क्योंकि आप तो समझ ही नहीं पाए क्या बोला मैं। आप में तो इंटरेस्ट नहीं था।
या आप लोग भयभीत हो गए थे, या आप लोग सकपका गए होंगे? क्या हुआ आपके साथ में? ये सब बताइए। ट्रूथ एंड एनर्जी, ये सब बताइए। हाँ, सर ने सुन लिया। सर के लिए चॉकलेट हमारे विचार, पर मैंने बोला था ये विचार मृत शरीर की तरह है, मरे हुए शरीर की तरह। इन विचारों को एनर्जी चाहिए, वो इमोशंस है हमारे अंदर भाव आते हैं तो विचार में जान आ जाती है, वो जिंदा हो जाता है, और वो विचार और वो इमोशन मिलके एक वाइब्रेशन का निर्माण कर देते हैं, और ये वाइब्रेशन जब घूमने लगती है तो एक एनर्जी बन जाती है, और इस एनर्जी की वजह से हमारे आसपास का वातावरण बन जाता है, ऑरा बन जाता है, और मेट्रलाइजेशन होने लगता है। ये पावर है हमारे। तो जब आपको ये समझ में आ गया कि एवरीथिंग इज एनर्जी, और एनर्जी ऐसे क्रिएट होती है तो आप काम करने लगेंगे ना, पर आपको तो समझ ही नहीं आया, आप तो टुकुर टुकुर देखे जा रहे थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना हमारे को। आपके मतलब की बातें बोल रहा हूँ, वो बातें जो आप 40, 50 और 55 और 60 की उम्र में भी शायद सीख जाए, बिना सीखे भी जा सकते हैं, वो सब बातें आपके सामने रख रहा हूँ इन 7 दिनों के अंदर, और आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि 7 दिनों के अंदर आप अगर सुन ली तो आप जाग जाएंगे और आप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। दैट इज माई पर्पस। क्या जरूरत थी, हम बुला ही लेते तेरा को, क्यों बुलाया हमने? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन आया, ताकि कॉलेज में ट्रांसफॉर्मेशन आए, क्योंकि आप वहाँ जाके रोल मॉडल बनने वाले हैं। उससे कॉलेज का भी भला है और आपका भी भला है। जो चीज़ें आपको समझ में आएगी तो ही तो आप क्लास में बोल पाएंगे, उसी तो जीवन में लागू कर पाएंगे। आपके सोच, आपके थॉट्स जब आपके इमोशंस के साथ मिलेंगे तभी बात बनेगी। अगर आप सोचते ही रह गए और आपके इमोशंस में कोई दम ही नहीं रहा, आप में कोई भाव ही नहीं आया, तो तोते बने हम लोग। इंसान में तो फील होना चाहिए, वो जो बोल रहा है उसे पता होना चाहिए वो क्या फील के साथ बोल रहा है। इसलिए आपको शाहरुख खान और आमिर खान अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके थॉट नहीं होते हैं। वो डायलॉग तो कोई भी बोल देगा, वो फील कहाँ से लाएगा? वो जो आप देखने जाते हैं मूवी, वो फील और इमोशंस चेहरे पे कौन ला सकेगा? वो पावर है, वो तो हमारी असली ताकत, हमारे थॉट्स भी नहीं है। थॉट्स से 10 गुनी ताकत है इमोशंस में। कोई बोले थॉट्स किसके पास होते हैं, तो हमारे फादर के पास। तो इमोशंस किसके पास होते हैं? हमारी मदर के पास। इसलिए कंप्लीट फैमिली तब बनती है जब फादर और मदर साथ रहते हैं, तब घर के अंदर बच्चों का परवरिश होती है, क्योंकि एक तरफ थॉट्स, एक तरफ दोनों जरूरी भी है। पर हमारी सोसाइटी थॉट ओरिएंटेड बनती जा रही है, इमोशन हमारे यहाँ से लेस होते जा रहे हैं। कल हम इमोशंस को जगाएंगे। देखिए आप लोगों के अंदर कितना इमोशन, क्योंकि टीचर की जो पावर है, टीचर से पूछा जाता है बताओ आपकी वीकनेस, तो 50% वीकनेस टीचर्स बताते हैं। वी आर इमोशनल, वी आर वेरी इमोशनल। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इमोशनल होना एक टीचर की ताकत है, ये टीचर की औकात है, क्योंकि टीचर इमोशनल लोगों को डील करता है, कंप्यूटर को डील नहीं करता। अगर आप इमोशनल नहीं है तो आप आईटी सेक्टर में जाइए, वहाँ ज़्यादा सूटेबल रहोगे, क्योंकि बच्चे तो भावनाएं देखते हैं। अगर उनमें कोई बदलाव आएगा तो आपकी भावनात्मक ताकत से आएगा, आपके विचारों की ताकत से नहीं आएगा, आपके बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज से बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि टेक्निकल जीवन जो है, एक मशीन तो बना सकता है पर हैप्पीनेस तो नहीं ला सकता। हम किसी को समझ ही नहीं पाएंगे, हम लोग तर्क देते रह जाएंगे, लॉजिक से देते रह जाएंगे। तो अब अब तो क्लियर हो गया, या कल पूछो तो वापस यही मिलेगा। कल अगर ऐसा पूछा मैंने और वापस यही बता दी तो मैं तो भाग ही जाऊँगा, ऐसा नहीं करेंगे। सही कह रहा हूँ। मुझे लगेगा कि सभा में आ गया मैं, इतने अच्छे से दिल से समझा रहा हूँ, अपने जीवन के अनुभव को निचोड़ के उनको बताया जा रहा हूँ, और ऐसे ही नहीं है, मैं अपनी लाइफ भी बताना चाहता हूँ। एक बार दिखाना भाई साहब। Coming to this place and talking on this platform, because you people are privileged and fortunate enough to have an extremely learned, well-versed and very deep trainer with you, and probably taking it to the next level. When he discusses something, uske baad it becomes really difficult to meet that standard and to touch those benchmarks. But honestly speaking, it's just a genuine attempt. Reason, the topic is very genuine. Interpersonal skills and social ethics. I predominantly deal with human resources as a domain, and last week there's one very popular journal in human resources where I was reading. 70% of the workforce normally is not able to deliver its highest productivity, or maybe plans to change the job, predominantly because of either their relationships with the co-workers or their equations with their bosses. So I just smiled and thought maybe probably people don't change their jobs
people change their colleagues, people change their bosses. And we are living into an era where probably we are struggling with the paucity of skills. We are struggling with dire need to retain people with us, the dire need to extract the most effective performance from people. So we understand the importance of interpersonal skills here, right? So although it is a complete subject and we may take days to talk about it, but looking into the time constraint that we have to finish it, maybe we have to just restrain our discussion to 1 hour. I'll straight away come to the point. How many of us are familiar with Daniel Goleman? Nice to know that. Would you share with us, ma'am, what reference have you known about him? My name is Aparna. Please be seated and don't call me ma'am, call me Shweta. No, ma'am, it's my courtesy. I'll call you ma'am. Ma'am, regarding emotional intelligence. So have you read it? Ma'am, not exactly a constrained book, not regarding him, but just a kind of reference in our psychology books. So I'm quite sure that you must be having this in your library. If not, please ensure that Daniel Goleman predominantly features in your library. He was instrumental in developing the phenomenal work about emotional intelligence at workplace. And there was a very interesting book which is a bestseller till date, which was EQ is more important than IQ at workplace. That is, emotional quotient is more important than intelligence quotient. And he predominantly touched upon 5 dimensions that were about self-regulation, self-awareness, motivation, empathy, and adeptness. And all these 5 dimensions had a very prominent place in the discussion that he has presented across that book, and several of his works after that also. And if ever you get time, I would personally urge, go through Daniel Goleman's work. It would help you a lot to become better humans, better professionals, better colleagues, and essentially better teachers, because we are in a very, very important profession that has a lot of moral responsibility. So I just thought if I could share a small questionnaire with you people. It's just a 30 questions questionnaire which explores your emotional intelligence. Not completely, but some dimensions of definitely self-regulation, some dimensions of self-awareness, some dimensions of empathy, motivation, and adeptness as well. And I would request that we are not going to share these answers, so let us be honest to ourselves. Responses ideal नहीं होने चाहिए कि ऐसा होना चाहिए. Responses honest होने चाहिए. What do I do in these situations, right? It's a normal Likert scale of questionnaire, जहाँ पे 1 to 5 के स्केल पे आपको बस नंबर डालना है क्वेश्चन से पहले कि आपके लिए आप कितना अग्री करते हो उस चीज पे. If it is strongly agree, then it is 1. If it is strongly disagree, then it is 5 on an incremental scale. So I would request you to take some 10-15 minutes, go through those questions, and please, you may approach me to seek clarity if there is any doubt about any of the questions. And in the end of it, we'll interpret the scores and keep it to ourselves for self-analysis. Okay, we are not going to discuss that with others. In case you have any doubts regarding any questions, please feel free to ask. Respect every day, where do I stand in comparison to my colleagues in terms of skills or performance, or where do I lack? So you should be more inclined towards your professional life when you respond to these questions. Knowing we may not be knowing, but definitely what we know has also been borrowed from somebody who has known it earlier. Accepted, credit people who have done those prominent work, and you'll establish credibility. Why did I use the word credibility? There was one, I am actually not very sure as to where did I read it, but way back somewhere I read that an individual essentially develops good image and good relations when he has 3 things with him. One is credibility. Now I don't remember what he quoted further, he or she, but to my best understanding, credibility comes when you are able to establish trust, and that comes out of your behaviors and your actions. The sir was also talking. Your thoughts govern your emotions govern your attitude, and your attitude ultimately governs your behaviors, which is reflected in action. Your behaviors and action determine your credibility. And most importantly, consistency in behavior and actions determine credibility. Today I may be very polite and helping to you. Maybe tomorrow I may not be the same. That does not establish, that erodes the credibility. I'm not saying that emotions have to be controlled,
But you have to regulate yourself in such a way that generally your emotions are consistent so that people develop that sense of credibility for you. Second, logical approach. We are taken in good taste and good merits when we talk logical. And how do we ensure that we talk logically? Remember, evidence defeats doubts. Take 1 minute to understand when I say evidence defeats doubts. E is example, F is facts and figures, E again is exhibits, A is analogies, T is testimonials, S is statistics. None of us would be in a situation that strong that we would be having all 7 of these with us. But whenever we talk, we should talk based on evidence. Our submission should be backed by evidence. As when I said this is borrowed from Daniel Goleman's work, automatically there's an evidence. You may assume that she's a self-proclaimed trainer just because she's good with communication, but the moment I bring in evidence that this is something which has been borrowed from a very established and acclaimed piece of work, इसमें evidence का element आ जाता है. So in our teaching, in our interaction with people, there should be a very, very strong contribution of logical approach that comes through evidence. Couple of times we may not even have any of these 7 things, but certainly evidence can come when you are generous enough to appreciate and thank people for their good work and utilize that good work at some other platform. So one was credibility that comes out of your behaviors and actions and consistency in them. Second is logical approach that comes through evidence. Any of those evidence, as I say, evidence defeats doubts. Third thing is emotional appeal. We are able to make a place when we have all these 3 things in place. Emotional appeal again has a lot of aspects to it, and that is the reason I urge that you may please go through Daniel Goleman's work on emotional intelligence. There are several experts in behavioral sciences that have a lot of work to do, but predominantly at this point of time we are talking about these approaches. Out of some prominent work in different areas of interpersonal skills, some prominent skills were identified as key interpersonal skills. We unfortunately do not have that much of time that we would delve into each of these, but we will still have it in our conscious mind that these are these areas where we need to put in efforts. Now when I say communication skills, sending and receiving messages, there was a very interesting quote that said, the biggest problem with communication is the assumption that it has been done. The moment I send you an email, I believe मैं अपनी तरफ से communicate कर चुकी हूँ, it is complete. So the idea of not having the other party in the process and being so self-centered that presuming that if it is done from my end, it is definitely complete is the biggest problem with communication. So that's the reason I quoted sending and receiving messages. Ensure that you always respond to people when they communicate with you, and ensure that you always elicit responses from people when they communicate with you. It is never complete if it is not two-way. That response may come in any way. Maybe you give me those looks, woman, please shut your mouth, you're not enjoying it. That is also a complete communication. At least I'm getting a feedback, you're not enjoying it. And maybe if I go quiet after that, that is a good communication that I've understood. If I keep speaking after that, that is definitely, I have high inflated egos. At this point of time, it is commercial, I have to speak, even if you don't like it. It is joking, and I'm quite in line with this idea that one has to be very, very conscious with communication to ensure that it is complete. Listening skills, a vast area. Last week we had a one-day training program on listening skills, and another colleague of mine and me, we divided 5 sessions, 1 hour, 15 minutes each, to talk about this area. And by the end of the day, we and our audiences both were of an opinion we can probably extend it till the next day. So this was the level of self-awareness that we had by the end of the day, that it is so broad an area. Setting goals, you might find that it is a very individual area, but we are talking about workplaces. One of your colleagues here shared that your behavior determines how people around you would perform, and eventually it interprets the image of the organization. So when we set goals, it's not only for ourselves, it's for the entire group.
Then ensuring that those goals are accomplished, tracking the goals, this is also a part of interpersonal skills. I wish to quote an example here. I had a very learned and very esteemed, people had a lot of respect for him, one of my bosses way back. He had an interesting style of supervision. Say today he'll assign you some work and say, Shweta, this has to be completed by Friday. And sounds good. Today is Monday and you tell me completed by Friday. I'll conveniently do that. I'll conveniently do that maybe when I start on Thursday. Naturally, now this is how we proceed. If it is Friday, we would probably be starting by Wednesday or Thursday, depending how much time do we perceive that it's going to take. Now, this gentleman, he called me on Tuesday, somewhere around 11:30, and he said, Shweta, बहुत व्यस्त नहीं हो तो आओ जरा बात करते हैं. I was like, okay. He said, बताओ जरा क्या डेवलपमेंट है, कहाँ तक बढ़े हम? And I was like, shell shocked. ऐसे कौन करता है? Who does this under the sun? This is not right. मुझे बात बिल्कुल पसंद नहीं है. कोई मुझसे कैसे ट्यूसडे को पूछ सकता है कि what have you done for something that was supposed to be completed by Friday? And he was very clear about it. Setting deadlines is not important. Cooperating to complete, and he was like, कुछ किया? मैंने कहा नहीं सर ज़्यादा कुछ नहीं बस I just planned how would I go about it. Okay, so share your plan with me. I was like, आज तो रज़िया actually गुंडों में फंस गई है. But this man is certainly going to take an answer from me. Obviously, I'm smart enough to manage it. But all what I understood was, today is Tuesday and tomorrow is Wednesday. Tomorrow also there's a clock which would say it's 11:30. And this gentleman is going to call me again tomorrow to ask me, how much has your plan developed? So he taught me that you should take a follow-up every day when you set deadlines for yourself. And I so love this idea of setting goals when I learned from him that when you set goals for others, you have to be a part of it. You just cannot delegate things assuming that once it is delegated, it is the other person's responsibility or accountability to complete. I just shared this example out of experience. Maybe you might be facing it every day, but for me it was the first time when I found somebody who takes an account every day. So by Friday it's for sure that the work is done and done well. Providing feedback, exchanging feedback is something Dale Carnegie Associates called us to take a training session on receiving feedback. And there was this very prominent trainer, Karen, and I just said, Karen, how do you expect us to take an entire day session on receiving feedback? He said, give me 3 days, Shweta, I can take 3 days on receiving feedback. But the feedback they said that the feedback accept karna bhi, it's an art and it's a skill and you need to work upon it. So when we give feedback to our colleagues, when we accept feedback from our colleagues, that is also a very prominent area. And there's a lot of training work done on receiving and giving feedback. Empowering. People around you may have a lot of empowerment coming from different sources. Leading, managing change, coaching in your own capacity. We all, some way or the other, serve as coach, not essentially only to our students. We do train our colleagues also in different capacities. Our exceptional behaviors and performances are examples for them to learn. Ethical decision making, delegating and sharing responsibilities. I added this word sharing because I believe you cannot always delegate, you need to be a part of it. Can you move to the next slide, please? I have a blurred vision these days, I don't know whether it's there or not. Thank you. Then self-awareness. And 2 or 3 websites have ample tests and quizzes to test self-awareness. And they work. You may refer to some quizzes on a website called mindtools.com. Mindtools has a lot of well-acclaimed questionnaires. Other than Mindtools, there's this another questionnaires like 5OB questionnaire and other questionnaires that help you to assess self-awareness. Even if you don't want to spend much time on it, kabhi casually you can go to Mindtools. Unke bahut sare questionnaires hain. You may simply search as self-awareness and you can assess yourself. Because probably knowing yourself is the fundamental thing before you get to know others. We often keep saying, she probably needs to improve on this person has this severe problem. Ignoring the fact that there is a big dustbin here also. Persuading,
And politicking, you cannot survive at workplace without politicking. What is the idea of politics? How do we understand politics at workplace? We all are victims of politics and we all are games to the game. Politicking only comes into picture when people have common interests. जब तक मेरी और आपकी रुचि एक ही चीज में है, तभी तक politicking होगी. There's a promotion, there's an appraisal, both of us are looking forward to. There's a clash of interest. Influence that distribution of privileges and rewards, and politicking starts. Let us not look at an environment where there's no politicking. It is never going to happen. Einstein said the only thing that's going to remain till the end of the civilization is stupidity. I say politicking is also one of them. It is inevitable, it is going to be there. The only thing is, politicking is not always dysfunctional or bad. We can very royally indulge in good politics. So this is again another area we can talk a lot about, but I've just introduced the concept of politicking. We may talk about it somewhere in future when we get to interact again. Running discussions and meetings. This is again a very important part of interpersonal skills. How do we behave and participate in discussions and meetings? I so well remember, there used to be one colleague of ours who used to always carry a diary, a notebook, and used to report first for every meeting. And most of my colleagues used to say, इसका ना सारा homework यही है कि मतलब जब तक meeting chair करने वाला है, मुझे तो देख ही ले. I should be the first one to come here. I said, ठीक है, it's good. And then she always used to carry a pen and paper, irrespective of the fact कि conference room में हमेशा conference pad और paper होता था. She also had a tendency कि जब तक सब लोग नहीं उठ जाते थे, she never used to get up from her chair, assuming that the meeting is done and we can call it a day. She had lots of things जो बहुत minute थी, but you could observe it during her behaviors in meeting. Her listening skills, her level of involvement, and she never used to interrupt anybody. मतलब मैंने अपने 3 साल के tenure में उनको कभी किसी को interrupt करते हुए नहीं देखा. But she was prominently there in every meeting. I mean, by the end of the meeting, अगर आप कहोगे कि meeting के 5 takeaways निकालो तो 2 या 3 contribution उनके ही होते थे. And I used to wonder how this woman gets the space to understand कि कब लोग चुप होंगे और मुझे बोलना है. But she was one example. I often used to tell her, had they permitted to take videos during meetings, your videos would have been a part of my training sessions. You are a very suitable live example of effective meeting participant. So next time when we are in meetings or in group discussions with our colleagues, let's mind our behaviors. Okay? Then conflicts, as I said, they also come when there's a clash of interest. Negotiations, I mean, so interestingly, it happens. I had an exam invigilation duty. My daughter was there at office, and I just said, so if you could just swap this duty with me. And this gentleman made it a point that very next day he came to me, Madam, kal aapki duty di thi, maine aaj aap meri duty. It's such a beautiful example of law of reciprocation. Agli bhi bata dijiye, main aapko bonus ke saath dungi wapas. Let me take 2 invigilations on account of that. But the idea is sab mandvali. I mean, it's simply a law of reciprocation. People are not that good, neither am I. Then working with different people, this we'll talk in the last slide, how people are different. Enough of preaching and summons. We can move to the next slide. I need 5 volunteers. If you don't mind coming here, there's a small exercise. It's just an interaction. We need to derive something. 5 people who wish to contribute. I mean, anybody. Irate way. Let me explain it through an example. Like, if I say, I appreciate when people send me emails with a well-drafted subject line, because that helps me every time to refer to a particular email after some point of time. Or maybe it helps me to relatively weigh how much this email is important and should I respond to it immediately. Or maybe I'm clear about the purpose and it's easy to sort the emails from my mailbox. So I would say I appreciate when people send me emails with a properly drafted subject line. Okay? What you are supposed to do is identify certain behaviors. I need one more person if somebody would like to come.
all of you have to be a part of the game and honestly speak out what do you appreciate in your colleagues. We don't need to name anybody, but there might be certain things which you appreciate at workplace. Similarly, I don't appreciate doesn't mean that I get pissed off or irritated, but definitely I don't appreciate. I may quote an example. I don't appreciate whenever somebody has tea or coffee with me at my workstation and leaves his or her cup there. I mean, you're not very sure when the attendant or the office boy is going to come and clean this table. And when you actually have coffee with somebody and 3 or 4 people seated together and they all leave their cups there and you're sitting on that workstation where you find like, this is something which I don't appreciate. So when I am there with anybody at his or her workstation and having tea or coffee, I ensure that when I get up, I take my cup along. Maybe I put it somewhere in the corner or maybe anywhere when I find it suitable that doesn't spoil his experience at his workstation. So I would say I don't appreciate when people leave their cups or glasses where they had tea or coffee. Third is I irate when. When I say I irate when, I mean to say I really get irritated. Say for example, I really get irritated when people talk over telephone in loud volumes at workplace. And probably they don't even bother as to what they are talking, who they are talking to, and it becomes like a public subject of discussion which I really get irritated about. So these are 3 things I said I appreciate, I do not appreciate, or I irate. In order. जिन्हें आप appreciate करते, those are good things. If you don't appreciate, you're not very irritated, but definitely you don't appreciate and irritated. Now how the game would go, we'll form a semicircle. Appreciate when I'm able to actually personally balance my family life with my work life. That is the best appreciation that I get from myself. I didn't appreciate when the stuff is not properly adjusted. When all my colleagues, they work together for a purpose or for a specific purpose that has been given to us. In that case, irate is you have to again start with I appreciate when. I appreciate when I do something with complete perfection. Can we try and find out things about other people? I appreciate when something is assigned to someone and they are doing the way the way जो मैं चाहती हूँ, जिस तरीके से वो करें. I don't appreciate when one of my colleagues eats what I was expecting to eat without my permission. Okay, great. I irate at the time when a person comes and disturbs me when I'm planning a particular lesson of mine. Suddenly he or she starts discussing his things and I'm not interested. But it's really difficult to convey this to him. But I'm irritated a lot. That's good. I appreciate it when someone shares his or her experience with me. I don't appreciate when someone is gossiping. I appreciate when what I thought when things will work in a way that works. Thanks for the contribution, but it was I irate because she said I don't appreciate. Let the game be between the 3 ladies. I appreciate when a female delivers a lecture really well with proper facts and figures. Her confidence appreciates me. I am appreciated by Dr. Shweta. Thank you. I don't appreciate when people talk with a very loud voice. I irate when people do not care about cleanliness. I appreciate people making changes in their lectures, like whatever topics they have been taking, suddenly, like with every, suppose GST has come, and this person was teaching income tax, say for example, and suddenly it's shifted. The kind of knowledge he develops within few seconds, within like probably a day or so, the preparation, people prepare it so fast. I appreciate that skill of many people. I appreciate जब कोई छोटी सी बात कह रही है और उसको बहुत बड़ा बना के बोलती है. Very true. Okay.
when people do not take care of their dress up. I get irritated by people not following. You have to join the group, but you have to complete this. You have to complete. Okay. When like public utilities and all, I've seen people spitting at places where spitting is not allowed. I've seen people keeping their feet at places where feet should not be kept. Like whenever I travel, whenever I go at different places, I've been seeing people not following rules. That irritates me like anything. I appreciate when people start helping each other in their workplace. I don't appreciate back bitching. I irrate when people don't keep the things where they should be. I appreciate when people speak truth. I not appreciate when the people sitting in front of me don't listen to me. I irate when people do not talk logical. I appreciate when people have smiling faces. I don't appreciate people who talk aimlessly. I irate when people use their mobile phones at their workplaces. I appreciate smiling faces. Is it getting difficult now? But we are enjoying it. सबको दूसरों को दुख देके बस. I don't appreciate when people don't wear their uniforms in a proper manner. You can always say I quit, okay? Whenever you wish. I irate when I irate when people do not make eye contact while talking. I appreciate when people make an eye contact. I don't appreciate who give fake smile. I thought she'll say I don't appreciate when people copy me. Yes. I appreciate when people listens very eagerly. I don't appreciate when people used to carry. I quit. So she's hands-on with it. And can we have all the 5 ladies here? Want to know their names because they volunteered, so they deserve to be known. And everybody deserves to be known, but we don't have that time liberty. I'm Dr. Nidhi Vyas, not from Biani. And which domain are you associated with? I am into international business. I'm Tina Mathur and I worked in Jaipur National University for 4 years and I'm joined this year. I'm Aditi Sharma and I'm a fashion artist. And what's your domain, subject? I'm MBA in Finance and Marketing. And what was your domain? Finance and marketing. Good morning, ma'am. My name is Priyanka Nagare. Recently shifted to Jaipur, and I have 7 years of experience. Right, my domain is MBA in international business. Good morning, ma'am. My name is Aparna Parekh and I come from Jagannath University. Ma'am, my domain is psychology. Interesting. That's the reason you gave me those expressions that you know a lot about. Thank you so much. Do's and don'ts of social behaviors. It should come right from the experiences of people who actually suffer or maybe enjoy at workplace. So there were certain things that came in the list of I appreciate. I appreciate if anybody has taken a note of all these things which they have said. I did not have a pen and paper, but I did register it in my mind that there were several things that they said that they appreciate. Trust me, when we meet next time, I'll certainly do that, okay? I'll be well dressed, I'll maintain an eye contact, I'll not speak aimlessly, I'll not speak or exaggerate something beyond the limit, I'll ensure that I don't keep my feet where it is not required, I would not carry a fake smile, I will follow the public rules and regulations, maintain cleanliness and many things. So this is our own data bank. Let us try and extract every day over discussions what is something that I do and the other person is maybe like not very appreciative. पहला काम तो वही होना चाहिए when I'm irritating. I mean, this is worst. I mean, I am somebody who can serve as an irritation to other person is definitely I need to seriously think about. So whatever comes as you get irritated by should be taken in the first place. Something that is not appreciated should be the second area that is to be addressed.
And something that is appreciated should be something that we have to build upon more and more and set examples. People know us by credibility of our behaviors and actions, and when they appreciate our behaviors and actions, our credibility automatically jumps to the next level. Right? We can jump 2 slides. Actually, the next is I don't. Now there are a few minutes which I want to spend here, and this is the last slide. There is this golden rule, law of reciprocation, that says treat the people the way you want to be treated and never extend those treatments which you don't want to have yourself being subjected to. Something which I would not like to experience, like as you said that I don't like when people don't listen to me when I'm saying something. That means like a couple of times I've seen students or maybe colleagues coming up to me, the first thing I do is I just leave my laptop. I mean, if I'm sure that I want to talk to that person, I ensure that I leave it. Most of the times I do one thing, that when somebody talks to me, I paraphrase. Now what do we mean by paraphrase? Like if somebody comes to me and says, बहुत confusion है ये electives को लेकर और मेरे को clear नहीं है, आप मुझे समझाओ. First thing I say is, so you mean to say that you need some clarity regarding the electives, right? I repeated the same thing, but the language was different. Paraphrasing is cushion approach. जैसे ही आप paraphrase करते हैं, the other person gets an affirmation, मेरी बात सुनी जा रही है, मेरी बात ठीक समझी गई है, and then probably you will not talk aimless, because आप वही बोलोगे जो सामने वाला आपसे पूछ रहा है. और पैराफ्रेजिंग से सामने वाले को बहुत रिलैक्सेशन होता है कि आपने उतना कॉन्सेंट्रेट किया कि उसकी बात समझ सको. एंड दिस वर्क्स वेरी वेल इन क्लासरूम टीचिंग. I am not exaggerating or boasting or bragging. I am not perceived to be the best faculty, but rarely I get a poor feedback from any student. Reason, I have practiced paraphrasing all my life. I mean, whenever students ask me something, I ensure that I paraphrase. वो वहीं पे relieved हो जाता है कि at least she listens to me. She cares, और I'm important for her. और अगर ठीक सुन रही है तो फिर जवाब भी ठीक ही देगी. I never fool with my students. Like if somebody comes and says, "Ma'am, मुझे इसको लेके बहुत terrible doubts है." If I'm not knowing, I would just say, "So you mean to say you want a clarity on this? I think you've not come to the right person. I'm not clued up." But उसको ये तो पता चल गया कि वो समझ गई है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ और सुन रही है. So practice paraphrasing. So as I said, treat others the way you want to be treated. I may not expect the other person to paraphrase what I say, but at least empathize and listen to what I'm saying and respond appropriately. मतलब अपना मंजीरा बजाना शुरू हो जाओगे, that is really irritating. I mean, respond to what I'm asking. Similarly, there are several things that I believe कि कोई और करता है तो मुझे मतलब अच्छा लगता है because शायद मैं यही अपने साथ experience करना चाहती हूँ, तो probably I should also give the same kind of response to others. So golden rule is treat people the way you want to be treated and don't treat people the way you do not want to be treated. Are we all on the same page with this? Do we agree to this? We don't have any doubt about this? That's what I'm coming to. I mean, golden rule says, treat people the way you want to be treated and don't treat people the way you don't want to be treated. And we all said that we are okay with this idea and we extended an affirmation to this. Is there anybody here who has even an inch of doubt on this? Or are we all okay with this idea? Actually the behavior automatically changes. So she's quite correct when she says that your behavior is a function of your individual personality and also the situation. So situation may be such that the response from the other person is not the way you are expecting, so maybe your behavior also doesn't remain the same. I mean, I be very polite to a student and he gives it back to me, listen woman please, I'm not understanding what you're saying, okay, probably you're not even concentrating. So I appreciate that and we accept that, but there's another version to it. We are not the sole determinants of what the other person expects. मैं दूसरों को वैसे treat करूं जैसे मैं treat होना चाहती हूं. Doesn't essentially mean that दूसरे भी वैसे ही treat होना चाहते. There might be certain things which I like, I appreciate. Maybe others don't think on those lines. It's not always essential कि मैं हमेशा दूसरों को वैसे treat करूं जैसे मैं treat होना चाहती हूं, क्योंकि हम एक साथ नहीं सोचते.
I may be very open to the idea कि अगर आप मेरी बात को पब्लिक में काटो with an evidence, और मैं कहूँ मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती इस बात से, जरूरी नहीं है कि सामने वाले को नहीं हो. Are you understanding that? I mean, when you are in a meeting and somebody says something, and I say, I think this would not work, last time we did this and the results were disastrous and it just backfired. Are you sure that the other person is okay with this treatment? Maybe you are okay. See, out of years of experience, your own confidence, बहुत सारे लोग criticism के लिए publicly open होते हैं, आते ही हैं panel discussions में, news channels में. I don't know what they have in their mind when they come there. People often come to the programs like सच का सामना, क्या करना चाहते हो अपने साथ, and you come in. But that is not essential. You can expect that the other person is also open कि जो पूछोगे मैं जवाब दे ही दूँगी. Platinum rule is, don't always assume that people wish to be treated the way you want to be treated. Understand that different people have different needs. Spend time in trying to know the people around you and treat them the way you believe they want to be treated. But ma'am, these are all controlled by our emotions. That's what I'm trying to say, that Goldman's work talks a lot about, although this platinum rule is not borrowed from Goldman's work. It says that you can actually put your emotions on a particular track with constant efforts. Like, say if I'm not liking somebody's behavior or conversations with me over a period of time, I may find out certain ways of avoiding instead of getting into confrontation. Actually, emotions behavior में तब reflect होते हैं जब वो बहुत लंबे time से accumulate हो रहे हो. I mean, few people who are aware of this would agree that psychology and OB says that emotions, attitudes actually have three components. One is cognitive, when we think, right?